next to me is not any doctor. He's fun, witty, yet he's very creative in his own field. He's the CEO of Bio Arrow. We have Mr. Anmol Kapoor. Welcome. Thank you so much for having. I love this sign. Yeah. Can I trademark that? Of course. Thank you. It's yours. It's copyrighted. No issue. Thank you. How are you today? Amazing. How is Alhamdulillah. Dubai with you? Habibi, come to Dubai. I love it. I came to Dubai. Habib, you are in Dubai now. Yes, You that's are why here. I love it. Thank you so much for having your own clinics and a lot of things here based in Dubai. But before all of that, before knowing who is Anmol Kapoor, I want to know, will you drink the chai today or not? Definitely. This is the most important. This is the most let's important. cheer to the chai. Let's chai cheer. Chai cheer. Chai cheer. Chai cheer. I think we Chai should cheer. patent that. We should get trademark that chai cheer. Everything is trademark Yes. nowadays. Now I have a very important question. Who is Mr. Anil Kapoor? I should call you Anil Kapoor? Anmol Kapoor. Anil No, Kapoor. I will call you Anil Kapoor because you have done Bollywood film. Yeah. Oh, yeah. Seriously? Exactly. Somehow Kapoors love Bollywood, or Bollywood loves Kapoors. We can say that's a trademark. We can copyright it. Yeah. Another one. Please. I will have so much intellectual property from this show. I love it. We are happy about that. Thank you so much. No problem. Now I want to know about your journey. Why have you joined this field of clinics, of bio and everything? Well, I believe that everyone should have an access to the best healthcare services, and there should not be discrimination faced by anyone on this earth. And everyone should have equal opportunity to succeed, live healthier, longer life, have a clean drinking water, have a good food, and have a good life to live. Exactly. So that's a desire I have. So whenever I see some social determinants or discrepancies that are impacting or realize that certain sciences, certain technologies are getting controlled by few people, Yeah. my desire becomes we have to democratize that. We cannot let it get controlled by just imagine if insulin could be controlled by a Canadian inventor, and had he kept the patent and didn't give it to the people, so many people would have died. But he didn't do it. He opened the access to everyone. That's a very inspiring thing, I must say. Now, Mr. Amon, I have a question. Now, this question is going on through my mind since a long time. You have started your journey and in this whole field at grade 8. Yes, Is that true? it's true. And that grade, I was playing PlayStation, Xboxes, and I think everyone over here on that age was doing entertainment stuff. But you are different. You are having that critical thinking. How? Why? Well, I come from a poor family. So my dad was born in a refugee camp in 1947. Wow. And at that time, riots and lots of things happened in India and Pakistan time. So extreme poverty my family has seen. So when we were growing up, obviously we had some limited resources. He educated himself. He became a small pharmacy he opened up. So he could look after the family. And obviously we're given some pocket money. And Diwali was a common festival we celebrate in Yes, India. I love that. Yeah, thank you. And it is a fun festival. And we have fireworks there, right? So we only have a small amount of budget given by family. You can only get so many rupees, and that's it. But I wanted to burst more firecrackers. So it was the only money I was given. I said, what do I do with this now? So I then somehow the idea came in. I don't know how. I found a wholesaler in the city who was selling firecrackers to some other retail shops. Okay. So I went to him, took that money, and came outside of my home. And those firecrackers just mark up the pricing, the retail pricing. Yeah. Lots of kids on the street came in and bought it. Oh. I said, ooh, that's a good business. So I went back, took the same money, and multiplied. In the end, I burst lots of firecrackers. So that was my first business. And what was your father's reaction? He was happy. He didn't Really? mind it. Yes. He said, you took smaller money and you multiplied. He said, I love it. Oh God, I wish if I had that kind of mindset when I was a kid only. I am now going into entrepreneur field when I am in my 30s. But what was your age at that time? Well, probably, I'll say 13 or yeah. 1-3? Yeah. And how old are you right now? Well, I'm old enough to give you a power lift and young enough to want more. Mashallah, mashallah. But you look very young.
Thank Seriously. you. So you have all those clinic. Do you apply that thing like creams and everything on yourself? Or? Well, I Because you don't have a much. very beautiful skin. Thank you. Thank Mashallah. you. Well, not much. I do looked into my skin microbiome. So I understand the type of bacteria I have on my skin. So I do nurture them. It's like a crop you have on your skin. So if you nurture the right way, and they don't react, they protect me against the harms of environmental. I travel a lot internationally. My skin routine is very simple. But what it does, knowing my skin microbiome, knowing my own personal body and genomics and the food habits, the hydration, I make sure I drink water regularly, make sure common sun protection, sunscreen is used. That's very important. This is very important. We forget that, especially men. Women do get that. I don't do sunscreen. Come on. It requires one more extra step and I don't have that time. It just takes only 5 minutes, brother. Less than that also, I know. But seriously, I want to know exactly. Now you have said something about Bollywood that you have done. So we will go a little bit after that. I want to know about your clinics. Why you have started the journey here in Dubai? Why Dubai? Dubai, I was on the Instagram, saw a video, says, Habibi, come to Dubai. And you came to Dubai. I came to Dubai. That's it. So I have to find this guy whose video Oh, I saw. I God. don't remember him. Now he have to know who are you now. Yes, I guess through your podcast we'll find him. Dubai is a fabulous city. It is an international city. People from all over the world, they come here. Want to make their dreams come true. Yeah. So they come from various backgrounds. They are successful, strugglers, whoever they are. Dubai makes the level playing field. Everyone is equal suddenly. And now everyone starts from the starter level. And they have their own stories to tell. Someone started at a bricklayer. Someone was doing cleaning cars, repairing tires. But many became successful, and some became big builders, stars, celebrities. So Dubai made the dreams come true. So I love Dubai, this never give up spirit that always keep fighting. And so when we're thinking of launching these new technologies, new software solutions, new tests, new way of thinking and science in healthcare, Dubai was the top city we thought. Among Singapore, Hong Kong, London, Paris, Dubai, check all the things we're looking for. It's one of the most safest country and more, one of the most advanced technology city that we have in all the cities around the world. And I think because of you guys coming here in our country, you're shining our country. I think that's also thanks to you for the whole initiative that you guys are doing for us as well. Thank you. That's a plus point. You are a CEO of a Bio Arrow, this thing, and it's an umbrella. You have a lot of things, under it. Can we know more about it? Yes, it could be a longer podcast then, if you don't mind. I don't mind. I want to know. I want to know. Okay, so in BioAero group of companies, we do delve into healthcare and non-healthcare. So in healthcare, we do have a multiple imaging centers in Canada where we do advanced testings for the patients. And we are developing one company is called Cardi AI. Okay. So that company has developed a 24-hour blood pressure monitoring using AI, Bluetooth enabled, allows us to get a more accurate measurement of blood pressure for 24 hours. In fact, we are waiting for a MOHEP approval in UAE, and we'll be launching the technology here soon. And we'll be able to then cut down the death rate in UAE soon by using a small tool. And then the same company is developing a very unique technology, at-home blood testing when someone is having a heart attack. When someone has a chest pain, they need a blood testing, something called troponin, or NT-proBNP is another biomarker for the heart failure. But it's very difficult to get those testing done at home. No one does that. You have to go to emergency room. Sometimes things get delayed. Sometimes you miss a heart attack. It needs a lot of studies and research on that. Yes, and so this company has developed a new test. Through your iPhone, you'll be able to know the number of your blood test, and in 15 minutes. That's interesting. This company, one of my other companies, so they did that. In BioAero, we deep dive into precision health side, where we have genomics, means DNA, the things we're born from our parents, the microbiome that lives inside our body or outside our body, skin, gut, oral, vaginal, any other parts of the body, they do play a role. And they are trillions of them. And sometimes they trigger the diseases, and they cause diabetes, depression,
mental health disorders, contributing addiction, side effects from the drugs. So many of those things now we're understanding from the gut microbiome, and we have more and more knowledge about that. So this company has a one-of-a-kind lab in Canada, and where we do cancer sequencing. We know which drugs are good or bad for the person, which could be toxic, so we don't give it to them. And screen for the cancers or recurrence of the cancers, and also talk about the biological age and how old we are, and what is aging us faster, because some people age faster, some age slower. True. Yeah, true. so some of my You're friends, going slower, I must say. I'm trying my best. No, you're not. You are. You are, mashallah. You are. Thanks. See, what? I've never met a doctor who is very fun talking. I don't know if I can say fun talking or witty talking, but I have one question. Now, you have definitely you have a lot of clients coming to the clinic, no? Most of them are young age. So, do they flirt with you, or they say like because you have nice skin? Do they start their sentence? Oh, doctor, you have a nice skin, and then the conversation goes ahead, or you just like, I'm a doctor. Well, when I'm a doctor, I have to be a doctor. Yeah, of course. So I can't flirt. So obviously this is a boundary. So obviously I don't want to cross the boundary. Yes. So if someone is my patient, I'm a doctor. I'm very serious and I have fun. I have conversations because my patients are my teachers. So whenever I start any consultation, I always ask them, what do they do? Where they come from? I always ask this question, and it's a very typical of me to ask question. Ask people question, everyone on the Sometimes you need to streets. break the ice also. Exactly. Make them fun. So, and it allows me to understand with their knowledge, their educational background, what kind of financial background they have. So, if I'm making a plan, it helps me make a plan accordingly. Okay. So if I don't know, and if someone comes in, tells me how I have chest pain, shortness of breath, skin, and this, I just write the same things, send them home, it's the wrong thing. What the person can afford? What the person even doesn't understand why they need these things? That's interesting, because I remember like back old days, it was the same procedure. You can go there and you write, and then you can just leave. There's no conversation. You don't have the interaction or networking with the doctor. I think now is everything becoming changed. I think also with the introduction of AI. So how important is AI in this field? Huge. Doctors and healthcare workers are scarce resource. We learned from COVID times. Yeah. We are not enough doctors on this earth. Population is growing and population is aging. Do you know by 2050, there will be over 2 billion people above age of 65. Okay. Yes, population is aging very, very fast. We are getting old very fast. We have young forces shrinking it down. So we need lots of doctors, but we don't have enough doctors. We'll never have enough doctors or healthcare providers globally. So, and plus doctors are not consistent. For example, me, if you see me early in the morning as a patient, I'll be more happier, more chirpy, I'll spend more time with you. But along the way, I may get tired, maybe had some bad experience with some patient or something bad happened with a patient. So maybe I'm not in the right mood. Maybe I'm distracted by the afternoon. Maybe I have to go to family to pick up my son or daughter or look after my mom and dad. So I may not pay as much attention for you later in the afternoon, but in the morning, I'm okay. So since I'm inconsistent, but AI can be consistent all the time. AI will treat you exactly the same way. It doesn't get tired. And in fact, it can give us different insights which a human eye or mind cannot process. So that's why what AI can do is AI can help us get better, improve our health outcomes, and manage our conditions much easier and more efficient manner. But will that adapt as a robot? No, because I've heard that a lot of robots are coming in China and they are doing the normal labor work, but will they replace doctors? Oh, that's very risky. Well, I can say doctors will be ever replaced, but yes, there will be robotic doctors. Yes, and we already have seen progress in this science. Robotic hand surgeries are happening. The special brain surgeries are done with the robotic hands remotely already. Precise laser treatments are done. And people got remarkable improvements. I have seen robotic ultrasounds are done in remote places where a human cannot go. We have seen in space stations. So I have seen robotic systems in Canada and other places where we are working with some companies, and where the doctor cannot go, our technician cannot go, and robotic arms, which are controlled by a human far away, and we're doing the ultrasounds. Same way, pregnant women, kids. So already advancement happening. So what robotic system can do is
they can allow us to provide care to multiple areas same time, become more efficient. But doctors will never be replaced. Doctors who work with robotic systems or AI, they'll be much smarter. They'll be safer doctors. Smarter. Because we want our doctors to be safe. Of course, definitely. Right? So then we are more safe. So if they're practicing safely, so AI is going to help us make them safer. So all the data sets are there. They'll understand. For example, we launched a mobile application in UAE, Dubai being the first, UAE being the first in the world, where we launched a Biongevity mobile app. And in Biongevity app, there is this very small feature of AI which we unlocked. There are multiple features we can unlock in the future. You open up an app, do a facial scan, it'll give you blood pressure and heart rate. Immediately? Immediately. Give it 2 minutes. It just scans your picture, the ring is moving, and then as soon as it's done, you get a blood pressure and heart rate. Is it legit? Yes. Okay, that's It's not interesting. fake, it's science. Okay, that's interesting. Yeah, you can test it in your cuff arm and Without try it. going to clinic, everything Yep. in your home. Yep. Yeah, That's his number will be very similar. Obviously, numbers are never 100% Yeah, of course, accurate, but yeah, very yeah. similar. And you'll be able to use the technology now right there. AI is there. But it can do more. It can tell us about my happiness, my sadness, my mood. It can tell us more insights about me. And now I can look towards getting better. In this mobile application, you'll be also able to see the type of air you're breathing in UAE or in Canada or in America. And it tells you how many days of life we are losing because of it. It is in the app there. It also has if you connect your Fitbit and Apple Watch or any wearable, and the AI will guide you, understand your human behavior, and how many hours of sleep you had, how many steps you walked in a day. If you drank enough water, you had some data along the way. Water is very important. It's very important. We don't drink a lot of water. If you're drinking too much alcohol, if you're smoking, it nudges you. It also reminds you about sunscreen, my friend. The most important thing I must Yes, say. exactly. And you have to look good to feel good. And so it has all these features in Biongevity app. And we could have launched this technology from anywhere on this earth. But we launched from UAE. First longevity app. And in fact, what we're doing is we are running world's largest longevity fitness challenge right now. Okay. Anyone can participate. Okay. It's running on until December 31st. Every day we have a winner. There's a leaderboard in the mobile application. You can see whoever achieves the maximum steps in those 24 hours, they're getting a gift assessments, longevity assessment for free. And end of the 31 days of December, in January, we are going to announce the top 25 UAE longevity champions. Now anyone could be the bricklayer in Dubai, could be the window washer, who's probably making 2,000 dirhams. But they'll be able to access a $50,000 worth of access to healthcare free. Which is the most important thing. Exactly. Health. Exactly. So they'll get a whole genome sequencing, microbiome sequencing, epigenetic, the biological age, the cancer screening, the whole assessment of the body for free. Those 25 people will be given them free. Am I one of them? If you have to become a champion. Everyone is one of them. Everyone is one of them. You can win every day some prizes. Make sure you keep winning that leaderboard. You can see that. Anyone can see that. I want Who's to. winning. I love challenges. And then next 15 days, make sure you achieve the maximum steps. Yeah, which is very important. Challenge is very important. It makes people more motivated to do that. Exactly. So the more we walk, the longer we live. Interesting. I have 3 more questions. Please. Now, this question is very personal. I want to know the most challenging moment throughout your journey. The most challenging moment through the journey is, still today is, making people believe what you know. Okay. Yes, so many times the science, the knowledge we gain, the perspective we have, but those people can't see through it because they have not given access yet. And that's the biggest challenge. So should you tell everything and disclose everything? And how do you explain to them? It has happened in humanity. When the X-rays were first invented, the person who invented it, he had to kill himself with X-rays to prove X-rays are okay and or how they can harmful, and he died because of that. Oh, good. This is a German engineer who was working on X-ray. How the antibiotics were discovered. So many inventions happen in humanity where we initially discarded. We didn't care about it. And the same way AI or genomics is difficult. It's a challenging science, a new science. It's like talking about planets and stars and Milky Ways. People say I have to focus on my home or my car. You're talking about Milky Way and the stars.
So those are challenges. So once you have the knowledge, and you see those people are getting it, and you want them to understand it, and Exactly. that's the biggest challenge I face. Oh God, and inshallah, I hope that the challenge will fade very, very fast. Inshallah. Inshallah. The next one is I want to ask. So many people, like they ask me, Ahmed, how old are you? I say I'm 37. I know I don't like 37. So they told me all people who are born in 80s till beginning of 90s, they don't age fast. They age backwards. Is it true? No. Why? You say true, I will be happy. I'm sorry. But I can tell you something cool. Yeah. What you can do is you can call Biongevity Clinic and get your age test. Know your age. So we can do a small blood test and we can tell you your biological age. So we can tell you, because there's a corner, you're 37. Yeah. You may be 25 still. You may be 20 still. Now I'm loving you. I love you too. This is the best. So what you have to do is, it doesn't cost much. It's only $199 USD, the cheapest, and you can get a telomere test. Telomeres are part of our chromosomes. The ends, they start to become old, older in some people who are having aging happening faster. The telomeres are getting impacted. So we can assess that. So if someone biologically, if they're younger, they're older, there are other techniques in epigenetic aging. We evaluate biological aging, methylation is another way, and we look at the other part of the science, if the genes, how they're working. We truly can come to the conclusion how old your skin, how old your heart, how old your gut, how old your mind, your joints. We truly can pinpoint all those things now. That's interesting. I never knew about that. Yes. I think I have to do that test right now. But before that test, there's one more test I want you to tell me about my skin, about people's skin. They are confused. They are dry, they are oily. And you have said off camera that there's one kind of a test you do. They take it behind your ears and they know what skin or what bacteria. Yeah, so a few things I'll mention. So lots of people have acne. And acne is a blessing. Okay, people may not like it. Many kids will listening right now. Look, I have acne. My girlfriend doesn't like me anymore. And they don't like it. They stay away. Yeah, but just give it for a few more years. You'll outgrow. Then after that, you'll have the youngest looking skin for the rest of your life than your friends who never had acne. Okay. Because acne is a bacteria grows in our skin that's causing acne, actinobacteria, and it lives in certain types of oils your body is producing, and those oils are protective. And they nurture the microbiome around your skin and keep your skin youngest the longest. Okay. So as long as you don't harm your skin, you keep the natural bacteria to grow and natural pH, maintain that. The most important thing. Most important thing. Otherwise, you're doing too acidic, too basic, you're killing the bacteria on your skin. That's where you lose the protective layer. And now you get exposed to the bacteria of the environment that your body is not used to. Now bodies start to react and fight against them. Oh God. So knowing the microbiome of your skin is very, very important. So that's why through our clinic you can get a sample, swab, and this we can even tell you next year your skin age. How old your skin. We are going to launch this technology early next year, and from a skin microbiome we'll be able to tell you skin is aging faster or slower. That clinic is doing amazingly well. It's technologically advanced, I must say. And I want to visit that clinic right now to do all of my tests. But before ending the beautiful podcast, I want to know one thing. I want to know what Arabic words do you know? Instead of Habibi. Other than that. Skip that one. Cafe hall? Okay. I want you to teach me one dialogue in Punjabi. Kiddan. Kiddan. It means... How are you? How are you? Kiddan. Kiddan. Dr. Anmol Kapoor. Kiddan. Kiddan. Vadia. Vadia means good. Okay, now I learned Kidda and Vadia. Vidya. And I will teach you one more word. Okay. You are Wasim. It means you're handsome. Thank you. You can say to all the ladies Jamila. It means beautiful. Okay, and I'll teach you one more word. Okay. Good word. I thought you would say something like that. Okay, so there are very similarities in Punjabi and Arabic words too. Okay. So Punjabi words, we call something called dard. So dard is also Punjabi. Pain. You see, it's a very similarity. So I have dard in my teeth. Yeah. So sabr. Sabr means like wait. Sabr is patience, right? Oh, patience. Patience. So we have sabr too.
Oh, that's Same interesting. word. You have similar work. You have Exactly, we almost same similar culture. cultures. Exactly. Yes, and that's why we love each other. UAE, India, India, UAE. That's a thing. Thank you so much, Mr. Anil Kapoor. Anmol Anmol Kapoor. Kapoor. That's why I'm saying Anil Kapoor every time. Well, he's getting jealous. We forgot to talk about the Bollywood thing. Please, very quickly, you have done a film. You produced it. Yeah, multiple. So Yes. I have produced a movie called Saroj Ka Rishta, which was Shahid Kapoor's sister Sana Kapoor. We launched her a couple years ago. We released this movie about body shaming. Oh, interesting. Yeah, so if you, she's a little bit bigger in size, and she played this lead role in the movie. You guys should watch that. Saroj was her name. Saroj Ka Rishta means Saroj's wedding. And another movie we made called Phullu, Phullu, talking about women feeling discrimination because of menstrual periods, and some All other message-oriented things. film. All message-oriented. Very important. Just using mass media to get the message. This That's is my always very goal. beautiful, and I will really promote those because I love those kind of topics that, to show people a message instead of having the mass and, like entertainment film. Message-oriented film is a very must in this generation, especially. Thank you so much for being part of this podcast, and to know more about you, I'm so much inspired. Very honestly, I want to have that kind of entrepreneurial mindset right now and to be a next businessman. Thank you. Thank you so much. Thank you for having me. It's interesting. Chai cheer. Chai cheer. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं रोमन खान और आज आप लोगों से एक ऐसी शख्सियत को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो ना कि सिर्फ एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं बल्कि एक प्रोड्यूसर, और अभी तो उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में भी है। द वन इन ओनली डॉक्टर अनमोल कपूर। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम नमस्कार अस्सलाम। सभी को। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैंने आपका मैं फ़ैन हूँ और आपकी जो वीडियोस होती हैं इतनी अच्छी होती हैं, इंस्पायरिंग होती हैं, मैसेज होते हैं। सो कोविड टाइम जो आपने काम किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था। थैंक यू सर। वो एक्चुअली क्या था, पूरी दुनिया जो थी वो आपको पता है कि लॉकडाउन लग गया था, तो फिर उस टाइम पे हमारे पास टाइम था कि हम लोग जो है लोगों को एंटरटेन करें। क्या करें, वो छोटा स्क्रीन तो है अपने पास, तो हम ही प्रोड्यूसर, हमने आपका काम भी किया और हमने जो है वो लोगों को एंटरटेन किया, बस लोगों को पसंद आए, अल्हम्दुलिल्लाह। और सर, टेल मी अबाउट योर जर्नी, कि आपने शुरुआत कहाँ से की। हमारा तो मैंने आपको बता दिया, हम लोग का जो कोविड के टाइम से हुआ। आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जर्नी तो मेरे बहुत से रहे हैं जी। तो डिपेंड करता कौन सा जर्नी आप पूछना चाहेंगे। एज एन प्रोड्यूसर। एज अ प्रोड्यूसर, हाँ, तो प्रोड्यूसर का जर्नी मेरा शुरू हुआ था 2013-2014 में। ओके। उस समय हमें दिमाग में वैसे ही फतूर आ गया, तो मैंने कहा एक फिल्म मेकिंग के बारे में सीख रहा था। जी जी। बचपन मतलब छोटा था तो मैं कुछ ना कुछ गाने, कुछ कहानियाँ मैं लिखता रहता था। तो कुछ मेरे ड्रामाज, प्लेज कॉलेजेस में लोगों ने प्ले किए हैं, तो मैंने लिखे थे, है ना। शहीद उधम सिंह के ऊपर भी मैंने एक प्ले लिखा था, हमने रशिया में प्ले किया था, सेंट पीटर्सबर्ग में। तो उसको डायरेक्ट भी मैंने किया था उस समय। पंजाब में बहुत टैलेंट है, नो डाउट सर। या पंजाबी आर आर्टिस्टिक पीपल, we are passionate. Yeah, anything we do, it comes from our heart. Right. आप लोग सब कुछ पैशन के साथ ही करते हैं। That's true. तो वो हमारे डीएनए में है। तो उसके बाद जब पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गए, थोड़े बहुत पैसे भी आ गए, तो कहीं ना कहीं भी दिल पे था भी कुछ करते हैं, बनाते हैं। तो एक हमने फिल्म बनाई पटियाला ड्रीम्स में, पटियाला से पास शहर है नाभा, तो वहाँ से हूँ। तो मैंने कहा फिल्म बनाते पटियाला ड्रीम्स, मैंने बनाई, जो मैंने डायरेक्टर को हायर किया उसने कभी बनाई। तो लेकिन हमने अच्छे एक्टर लिए पंजाब के, कुछ बॉलीवुड से एक्टर लिए, और हमने काफी लर्न किया। फिल्म सक्सेसफुल इतनी नहीं हो पाई फाइनेंशियली, क्योंकि गलत टाइमिंग पे रिलीज हो गई, हमें नहीं मालूम था, पहली फिल्म थी। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ये पूरा या किसी को समझ नहीं। कभी कभी फिल्म नहीं खराब होती, कभी टाइमिंग ही ऐसी हो जाती है कि आप कुछ नहीं कंट्रोल कर पाते। That's true. उसके गाने बड़े अच्छे थे, दे स्टिल आर माय फेवरेट सॉन्ग। बिल्कुल, गाने बड़े अच्छे, ब्यूटीफुल, मेलोडियस। तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो उसके बाद हमने फिर हिंदी की कुछ फिल्में करी, तो सोशल मैसेजेस के साथ करी। फुल्लू फिल्म करी, शारिब हाशमी को हमने एज ए मेन लीड में लॉन्च किया। फिर हमने शाहिद कपूर की जो बहन है सना कपूर, उनको सरोज का रिश्ता में लॉन्च किया हमने कुछ साल पहले।
तो बस ये जर्नी चलता गया वहाँ से। वेरी नाइस सर। मुझे एक्चुअली डीएनए से एक माइंड में मेरे क्वेश्चन आया है सर, आपको क्या लगता है मेरी एज क्या होगी? आई थिंक आपकी एज मुझे लग रही है 18-19 साल। अरे सर क्या मतलब देखिए, अब ऐसा अगर कोई लड़की को कहते तो खुश हो जाती है। मैं 32 का हूँ सर, मैं 32 लगता हूँ? क्या कहते हैं आप? अब मैं सच बोलूँ? जी जी 50 के लग रही है। रियली? मजाक कर रहा हूँ यार। अब मेरा ऐसा फ्लैशबैक जाएगा माइंड में, जोया हाँ 50 का हो सकता। अच्छा, उसकी वजह क्या है? नहीं, सो बेसिकली नो वन नोस, ठीक है ना। लेकिन आप यंग लग रहे हैं, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू है ना। तो देखिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं आपके, आप ऑब्वियसली अच्छा खाना खा रहे होंगे, आप ऑब्वियसली अच्छी एक्सरसाइज कर रहे होंगे, है ना। आप पानी भी अच्छा पीते होंगे दिन में, है ना। आप जो बुरी आदतें होती हैं उसे दूर रहते होंगे, जैसे दारू वारू, हाँ दारू से तो है ना, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं बॉडी में, और आप सोते भी अच्छा होंगे, है ना, नींद भी अच्छी लेते होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको यंग रखने में काम कर रही हैं, ओके, है ना। लेकिन हम इसको मेजर कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है। आप 2-3 सीसी ब्लड लेते हो, फिंगर प्रिक से ले सकते हो, है। उस ब्लड को हम टेस्ट करते हैं, है। वहाँ से मालूम पड़ जाता है कि आपकी एक्चुअल एज कैसी है। देखिए जो पासपोर्ट में एज होती है, या जो डेट ऑफ बर्थ है हमारी, वो असली एज नहीं है, एक तरीके से सोचिए। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि देखिए हर इंसान अपने एनवायरनमेंट के अनुसार उसकी बॉडी रिएक्ट करती है। कुछ इंसान लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कुछ जवान रहते हैं। क्या? मैं मतलब माइंड में एक मेरे सवाल ये आया कि ऐसे तो आपको सबकी रियल एज पता लगती होगी, हाँ, तो कोई आपके पास ऐसा आया कि आपको आके बोले प्लीज मेरी रियल एज कम कर दो? आते हैं ना लोग। अच्छा, हाँ जी, वो कहते हैं एक दोस्त है, वो कहते हैं अभी मेरी यार एज कम करो यार। मैंने क्यों करना है? हाँ। कहते यार मुझे और गर्लफ्रेंड्स रखनी है। अच्छा, गुड। तो ये हो सकता है, मतलब पॉसिबल है कि आप अपना रिवर्स लगा लो? मतलब साइंस इतना हो चुका है कि हम स्लो कर सकते हैं, गारंटीड। अच्छा, हाँ, हम एजिंग को स्लो कर सकते हैं, जो एजिंग का जो प्रोसेस है, रिवर्स के टाइप के उस स्टेज पे अभी हम आए नहीं हैं। ओके। लेकिन एक एग्जांपल लीजिए आप, ठीक है। एग्जांपल ऐसे भी, अगर आप एक सेब लेते हैं, है ना, दरख्त पेड़ से सेब लेते हैं, अगर आप उसको उठा के अपने रेफ्रिजरेटर में रख दें उसी समय, है ना, अच्छे टेम्परेचर पे हमेशा फ्रिज में रहेगा, इवेंचुअली जो सेब भी मर जाएगा, उसका डीएनए भी उसको मार देगा, लेकिन वो काफी देर फ्रिज में रह जाएगा। हाँ, वो रह जाएगा, उसका एनवायरनमेंट अच्छा है ना। बिल्कुल, है ना। अगर ये सेब जो बाहर रखा हुआ है धूप में, वो रिंकली हो गया, मुरझा सा गया है ना, थोड़ा सा दाग वाग भी आ गए हैं, आप ले जाकर उसको फ्रिज में रख दो। अच्छा, वो दिन तो थोड़ी रहेगा। हाँ, जितना मुझे बोटॉक्स लगा लो, फिल्म लगा लो उसमें, सही बात नहीं रहेगा ना फिर तो वो। तो आपको अगर यंग रहना है जी, तो आपको अर्ली शुरू करना पड़ेगा। हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कमिट करना पड़ेगा। ओके, तो आप कहते हैं यंगेस्ट लुकिंग एंड हेल्दीएस्ट लिविंग लॉन्गर पर्सन हो सकते हैं। तो मतलब आप बचपन से डॉक्टर हैं क्या? नहीं, बचपन से तो मैं याद है मेरे, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो जब मैं छोटा होता था, मेरे मम्मी कहते हैं भाई तू ना छोटा होता था, कहता था कि मैं, तू कौन था, नाम क्या है? तो मुझे कहता था डॉक्टर अनमोल सिंह। अच्छा, तो मैं छोटा सा था, मुझे मालूम नहीं, सबकॉन्शियस में चाहता था शायद, राइट। तो शायद खुदा मेरे मुंह से वही निकलवा रहा था मेरी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली क्या है कि मेरा भी ऐसा ही, मुझे एक वाकया याद आया कि मेरे बचपन में, वो आपको पता ही है, क्लास में मैं भी छोटा था तो सबको कहते हैं व्हाट्स योर एम, है ना, यहाँ पे लिखो। किसी ने लिखा या आई वांट टू बी इन आर्मी, किसी ने लिखा डॉक्टर, बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर लिखा, आई डोंट नो क्यों। तो बहुत सारे लोगों ने वो लिखा अपना, ये मतलब डिफरेंट जो भी है। मैंने लिखा आई वांट टू बी अ रॉक स्टार। तो उन्होंने मेरे बाबा को बुला लिया स्कूल पे। माशाल्लाह, रॉक स्टार बन गए। आई डोंट नो, मतलब ये आप हो, आपने जो बात की तो मुझे वो बात याद आ गई कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं रॉकस्टार हूं तो नहीं, लेकिन आई एम ट्राइंग इंशाल्लाह कि हो जाए ऐसा, कि पहले से ही बचपन से जो आपका शौक हो, आप उसी को, जो आपका पैशन हो, आप उसी को फॉलो करो। अभी जैसे कि आप हो, आप मुझे ये बताएंगे आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे प्रोड्यूसर हैं या अच्छे एक्टर हैं? क्योंकि मुझे पता चला है अंदर टीम से कि कल आपने जो है अपना डेब्यू भी किया है एक्टिंग में। हाँ जी, किया है। और तो जो डायरेक्टर माशाल्लाह बहुत उन्होंने काम करवाया, मेरे से पसीने आ गए। हाँ, सच में पसीने डलवा दिए उन्होंने तो हमें बहुत तारीफ की। उन्होंने एकदम ऑपोजिट कहा है सर। उन्होंने कहा एक्चुअली जो वो उनके साथ स्टारकास्ट थे, बोला उनके पसीने छूट गए।
वो इतने मतलब एनर्जेटिक और वो एकदम लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम है आपका कैमरे के आगे, क्योंकि कैमरे के आगे बड़े बड़ों की जो है वो मतलब वो बहुत डरते हैं ना कैमरे के आगे, इट्स नॉट ए इजी थिंग। हाँ जी। तो आप मुझे बताएं, यू आर अ गुड डॉक्टर, गुड प्रोड्यूसर या गुड एक्टर? देखिए, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वाह। और अच्छा इंसान बनने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हम निकलते हैं। राइट। तो जहाँ से हमें सेल्फ डिस्कवर होता है, हम अपने बारे में जानने लग जाते हैं ज़्यादा। राइट। कि हम कैसे हैं। बिल्कुल। है ना, तो उसी जर्नी के ऊपर हूँ मैं। अभी मुझे नहीं मालूम मैं बेस्ट किस में हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ किसी ना किसी में बेस्ट बनने की। देखिए, कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं, अभी मैं भी चाहता हूँ। मेरा एक भाई है, ही इज़ अ पायलट। नाइस। हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें कहा ट्रैवल की हद तक। समझ रहे हो आप? तभी एक्टिंग आपको भी अच्छी लगती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको भी क्या लगता है कि अभी मैं रुचि जी से बात कर रहा था, शी सेड आई एम ऑल्सो अ टिकटॉकर, लेकिन सिर्फ आई एम अ स्टॉकर। ये बहुत अच्छा है। और जिस तरह से आप साइंस को लेकर आ रहे हो, वो मुझे बताइए कि आपका क्या आइडिया है जो अभी आपने मुझसे डिस्कस किया। देखिए, हम चाहते हैं लोगों तक मैसेज पहुंचे कि आपकी असली उम्र क्या है। राइट। है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहले से मालूम पड़ जाए आपकी उम्र इस समय क्या है, आप 25 साल की हो, 20 साल की हो, 18 साल की हो, एक्चुअल में जो बॉडी आपकी बॉडी की क्या उम्र है। है ना, वही जो पासपोर्ट लिखा हो उसको मैंने नहीं रखता, मैं जानना चाहूंगा। वैसे हाँ, तो प्लीज आइएगा, है ना, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, एक जो आपके डॉक्टर होंगे, आप भी खुद होंगे, तो आप अपना जो एक हेल्थ प्लान बना सकते हैं। आप अपना एक स्केड्यूल बना सकते हैं। जैसे सेब की मैंने एग्जांपल दी, कि मैंने कैसे अपने आप को प्रिजर्व करना है। मैं जल्दी बूढ़ा हो रहा हूँ, तो वो चीजें जो खराब कर रही हैं मुझे, मैं बंद कर दूं। बिल्कुल ऐसा ही है। राइट। ठीक है ना। है जो चीजें मुझे यंग रख रही हैं या यंग रखेंगी, उसको और मैं ज्यादा करूं। अगर होगी नॉलेज तभी तो कर पाएंगे हम। बिल्कुल। तो ऐसे हमने कुछ टेस्ट हैं जो हमने क्लिनिक दुबई में खोला है, उसका नाम है बायोलॉन्जेविटी। जो क्लिनिक है वो लॉन्जेविटी की बात करता है। लॉन्जेविटी ये होता है कि आप जो हेल्दी पीरियड है जिंदगी का, जी कितना लंबा आप रख सकते हो। ओके। ठीक है ना। अगर आपकी सपोज कर लीजिए किसी इंसान को 30 साल में, 40 साल में शुगर की बीमारी हो गई। हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं एक्चुअली। वो बहुत यंग है। और उन्हें जो है वो डायबिटीज है। हाँ जी। अब उनको वो डिजीज स्टेट में आ गए, हेल्थ स्टेट में नहीं है वो। हेल्थ स्टेट उसको कहा जाता है जब आपको बीमारी नहीं है, आप कोई दवाई रेगुलर तौर पे नहीं रह रहे हैं, है ना, डॉक्टर ने कोई डायग्नोज नहीं करी आपको बीमारी को रेगुलर। बिल्कुल। इट मीन्स आप हेल्थ स्टेट में है। अगर वो डायबिटीज 30 साल में हो जाती है उनको, तो डिजीज स्टेट में आ गए। अब वो उनकी उम्र लंबी ज्यादा नहीं हो सकती। ओके। तो अब वो ट्राई भी करें तो भी ट्राई करेंगे। हाँ, एक्सटेंड कर लेंगे। हाँ, मतलब जैसे आपने कहा कि हम उसे रोक सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्लो अगर ध्यान रखेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखेंगे वो, है ना, ढंग की दवाइयाँ लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वेट को लिमिट, एक्स्ट्रा ओबेसिटी रखेंगे, मोटापन रखेंगे, इम्पॉसिबल बात है ना। अगर ढंग तो उसकी उम्र लंबी कर सकते हैं। बेसिकली जिस दिन भी किसी डायबिटिक किसी भी इंसान को, अगर आप मुझे कहें डॉक्टर कपूर आपको आज डायबिटीज होगी, डायग्नोसिस हो गया आपको, उसी दिन मेरे 10 साल खुदा ने ले लिए, 10 साल गायब हो गए। राइट। हाँ, ऐसा ही है। अगर मैं मेहनत करूं, तो मैं 10 साल वापस कैप्चर ले सकता हूं, कर सकता हूं। बिल्कुल। हमें मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, बहुत है। लेकिन वो जब डिजीज स्टेट आ गई है ना, वो हमें परेशान कर देती है। तो हमारी जो क्लिनिक का फोकस है, हम आपको जो हेल्दी स्टेट है उसको लंबा रखना चाहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब इसकी कोई एप्लीकेशन भी है क्या? देखिए, एक बायोलॉन्जेविटी ऐप हमने लॉन्च करी है। आप हाँ जी, हाँ जी, तो छोटा सा एक मैसेज देना चाहते हैं उसके थ्रू। हमने एक बड़ा अच्छा टूल उसमें डाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। आप बायोलॉन्जेविटी ऐप स्टोर पे जाइए, ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले पे जाइए, ऐप स्टोर पे जाइए और बायोलॉन्जेविटी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। है, उसके बाद अगर आप उसे रजिस्टर करेंगे तो उसमें आपका जो वेरिएबल होता है, फिटबिट है या एप्पल वॉच है या आपके पास कुछ और भी वेरिएबल आप पहनते हो या आपके पास है, तो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। है ना। उसके बाद जो आपका डेटा आपके हाथों में होता है, आपके फ़ोन में आता है, और एआई उसको अब लर्न करना शुरू कर देते हैं कि आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आप कितने घंटे सोते हो, कितनी एक्सरसाइज करते हो, कितने स्टेप्स वॉक करते हो, फिर आपको रिकमेंडेशन देना शुरू कर देती है ना। उसी में एक और अच्छा बहुत सारा टूल डाला हुआ है। बहुत से लोगों को मालूम ही उनका ब्लड प्रेशर क्या है।
हाँ, है ना, डॉक्टर के पास जाकर चेक करते हैं पुराने ज़माने जैसा मशीन लगा के। हाँ, राइट। इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐप खोलिए, अपना चेहरा दिखाइए, फेस स्कैन से आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट मिल जाता है। फेस स्कैन करने से? हाँ जी। मतलब ये कहाँ पहुंच गया भाई? ये तो रियली, हाँ जी, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, लाइव है। आप डाउनलोड कर लीजिए आज ऐप को। मैं डेफिनेटली डाउनलोड करूंगा, करके उसकी वीडियो बना के लोगों को दिखाइए आप। मैं तो ऐसा करूंगा क्योंकि मेरा तो काम है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और इतने सारे लोग जो हैं वो मुझे फॉलो करते हैं। अगर उनमें से 10 लोग भी ये उनका फायदा हो जाए तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। हाँ जी, तो ये तो आप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और बहुत से कुछ है उसमें। उसमें ये भी मालूम पड़ जाता है कौन, अगर हम बाहर जो हवा होती है, जी, जो जी। हमारे आसपास की हवा अगर हम ले रहे हैं अंदर, तो वो भी हमारी उम्र कम कर देती है। अगर उसमें बहुत सारी पोल्यूशन हो, बहुत सारी चीज़ें हों, है ना, तो वो आपको बताती है अगर आप इस एयर को कंटिन्यूसली ब्रीथ करेंगे तो कितने दिन जिंदगी के आपके कम हो रहे हैं। वाकई में देखिए, हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं होता। एट द एंड हम क्या करते हैं, हम किसी क्लिनिक में जाते हैं, हमारा बीपी चेक करो, हमारा शुगर चेक करो, और जब वहाँ से हमें एक कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है कि आपको डायबिटीज़ हो गया है ना, अल्लाह ना करे आपका ये बीपी हाई है, डाउन है, आपकी एज 25-30 में आपका बीपी हाई होता है, तो इट्स अ बिग थिंग। मतलब इनडायरेक्टली आप लोगों की इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हो सर। सच्ची बता रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़ उस चीज़ में ले आओ, उस डिवाइस में ले आओ जिससे आजकल इंसान जुड़ा हुआ है। हाँ जी, और फ्री में कर रहे हैं, और फ्री में, ऐप फ्री में अवेलेबल है। देखिए, मतलब इसमें अभी मेरे जैसा इंसान, मैं अपनी बात करूंगा, और मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जो फोन के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकते। वो हमेशा अपने डिवाइस के साथ होते हैं और इसी डिवाइस से आप फायदा उठा सकते हो। दिस इज वेरी गुड। अरे सर, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर कपूर सर, आप इसके ऊपर मूवी बनाइए। और मूवी में आपको स्टार करना पड़ेगा। एक्टर तो आपके सामने बैठा ही है। देखिए, हम लोग भी कितने तेज हैं, कहाँ से स्टोरी लेके आया और खुद पे ले आया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जरूर फ्री में काम करवाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल सर, आपके लिए तो कुछ भी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो लोगों के लिए, हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे सर। हाँ, जरूर, क्यों नहीं। तो ये तो मतलब मेरे लिए सबसे पहले मैं डाउनलोड करूंगा ये ऐप को, क्योंकि मेरे लिए मेरा कोई डॉक्टर दोस्त नहीं है। मेरी बचपन से नहीं, ये गलत कह दिया आपने। मैं कौन हूँ? था सॉरी, आपसे मैं बोलने लगा था कि मेरा कोई भी डॉक्टर दोस्त नहीं है आपसे मिलने से पहले। ठीक है, जब से आपसे मिला हूँ यार, एक डॉक्टर मेरे माइंड में ऐसा था कि एक डॉक्टर जो होते हैं, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, थोड़े ऐसे बोल दो, दिल में जो है बोल दो, खड़ूस टाइप के होते हैं, मुझे ऐसा लगा था कि वो सिर्फ अपने मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करते। वो जब मैंने आपसे बात की तो मुझे ऐसा लगा, नहीं सर, आप हमसे ज्यादा अच्छे हो। मतलब आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है मूवीज की, आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है सोशल नेटवर्क की और हर एक चीज की। तो मैं गलत था। मुझे एक्चुअली क्या है, वो इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है आज भी, तो कभी मैंने डॉक्टर दोस्त बनाया ही नहीं। बट सर, आपके साथ मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इट वॉज लवली मीटिंग यू सर। और मैंने बहुत कुछ जाना आज साइंस के बारे में भी। देखिए, हम ऐसे लोग हैं, आपको तो खुद पता है सर, आप हैं सरदार, हम हैं पठान। हमें तो या ठोक के या एंटरटेन करके समझाओ कोई भी चीज। अच्छा, सही, बिल्कुल इसी तरीके से हम समझते हैं। बिल्कुल, हम ऐसे ही समझते हैं। तो आपने हमें इतना एंटरटेन किया कि हमें समझ आ गया है कि व्हाट इज एक्चुअल साइंस। हाँ जी, तो बहुत अच्छा है और आपने बहुत इजी बनाया लोगों के लिए। मैं आप लोग से भी यही कहूँगा गाइज, अभी डाउनलोड करिए सर प्लीज़, अगर आप बता दें। हाँ जी, ऐप का नाम है बायोलॉन्जेविटी, बी से शुरू होती है, BIONGEVITY। आप वेबसाइट भी है bionjevity.com। हमारा क्लिनिक है दुबई में, पहला ऐसा क्लिनिक दुनिया में खोला गया है, एंड जो एक्सेस आपको मिलेगा, सर्विसेज आपको मिलेंगी आपके हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, और माशाल्लाह किसी भी दिक्कत के लिए आपको जो टेस्टिंग, जो सर्विसेज आपको मिलेंगी दुनिया में वो कोई नहीं दे सकता। दुनिया में, दुबई छोड़ी, दुनिया में नहीं कोई दे सकता वो चीज़। अमेजिंग सर। सर, मैं एक्चुअली ऑन कैमरा एक चीज़ करना चाहूँगा। अभी ये मेरा इंस्टाग्राम है सर, तो इस पे प्लीज सर, आई वांट टू फॉलो यू। मैं आपका फैन बन गया हूँ। अरे नहीं, मैं आपका फैन हूँ। नहीं, वाकई आई वांट टू फॉलो यू यार।
तो मैं गाइस नीचे आईडी मेंशन करूंगा, मेक श्योर आप लोग भी फॉलो करें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच सर। नहीं, थैंक यू, आपने इतनी सेवा करते हैं। देखिए, लास्ट में ये कहूँगा, देखिए हंसना बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं, है ना, वो आप लोगों की उम्र लंबी कर रहे हैं। जो लोग हंसते हैं ना, एक थेरेपी है। हाँ नहीं, हमारे हार्मोन्स होते हैं ना बॉडी में, जब हंसते हैं हम, तो हमारे जो बुरे वाले हार्मोन होते हैं कम हो जाते हैं, अच्छे वाले बढ़ जाते हैं। तो वो हमारी उम्र को लंबा करते हैं। सर आप लोगों ने हेल्थ के लिए सब बनाया, ब्लड प्रेशर के लिए बनाया, डायबिटीज के लिए बनाया। एक पर्सनल सवाल है, मतलब है ना, अंडर द टेबल बोल सकते हैं। अच्छा, जबान के लिए कुछ बना है जिसकी लंबी जबान हो ऐसे? हाँ जी, बना है। अच्छा, हाँ, वो क्या? उसका नाम है टेप लगा दो उसके ऊपर। अरे सर, फिर आप नहीं समझे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब उसके लिए तो मेरे पास, खुदा के पास भी सोल्यूशन नहीं है। वाकई में सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी चिट चैट हुई। अब तो हम मिलते रहेंगे, अब हम फ्रेंड्स बन गए हैं, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, पक्का। टिल देन आप लोग दुआओं में याद रखिए, और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं प्लीज़ सर को फॉलो करिए, क्योंकि ये आपका ख्याल रख रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं गाइस। तो टेक केयर एंड खुदा हाफिज, शब बखैर।